Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this lecture of Mechanics of Solids 1. जो अच्छी बात है वो ये है कि today is the last topic. We are starting the last topic of this subject, and that is the stress transformation. We have came along a very long distance. We have discussed so many topics and we have learned so many things. And the happy moment is that we are into the last topic of this particular course. I hope कि आपकी जो जर्नी है, जो अब तक की लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, that has gone very well. And today's lecture, जैसे मैंने last lecture में I told you in last lecture that today's lecture would be one of the very interesting lecture, one of the my favorite topic in this Mechanics of Solids 1. So initially this used to be a part of Mechanics Solid 2, but with the last PC जो National Curriculum Revision Committee की meeting होती है, they have revised this curriculum and then now they have included this topic into the topic of the Mechanics of Solid 1. So I hope that this particular topic would be of interest to you as well and you will enjoy learning this topic. So let's start and let's jump into the topic and see why I'm so excited about this topic as well. And I really want you to be excited about this as well. So as far as this topic is concerned, these are the content from the course content that has been given to you and that has been given to us by the HEC and by I think that has also been approved by the Pakistan Engineering Council as well. So we would be studying the biaxial state of stresses. So far you have studied the uniaxial state of stress and we have learned a lot of things. We have discussed so many things in the uniaxial state of stress. I have uploaded lectures on stresses as well, then on uniaxial stresses, normal stresses, compressive stresses, and then the last lecture of my pre-midterm topics was on shearing stresses as well. So we have done a lot of things, and then we have also covered the torsional stresses as well, the torque topic, and the only thing that is still left is the bending theory, flexural stresses and the shearing stresses while in the bending, in the beams. So that is the only topic that is still left. I hope that as soon as I finish this topic of stress transformation, inshallah I will have enough time to spare some certain time to prepare content on this flexural stresses as well. So anyhow, so we will be studying the biaxial state of stresses and then we'll look for the resolution of stresses as well. So we'll see how exactly we would be able to resolve the stresses along any plane of our own choice. And then we'll see what are the principal plane, what are the principal stresses and principal strains, and then we'll see whether there is a graphical representation, because in these two first lines everything would be mathematical. We will be deriving so many equations of the mathematics, and then we'll see whether we are in a position to represent those mathematical equations in terms of a graphical format or not. So the very well-known cheese that is the Mohr circles of stresses and strain. We'll try to transform those transformation equation that would be developing today, and then inshallah in the Mohr circle we'll be doing in the next lecture. And then we will be spending about 2 weeks time on solving different numerical based on the mathematical equation as well. Then we'll look for these mathematical problem based on the Mohr circle as well. So these are the total topic in this main topic area of the stress and strain transformation. And as you can see that this is the last topic and lecture number 32 would be the last lecture, and the total classes that would be spending on these topic would be 6. So that would mean that we would be spending 3 weeks on understanding of the stress and strain transformations. So we'll be spending more time on the stress transformation, and then in the end we would see whether we will have enough time to discuss the strain transformation as well. Inshallah, I hope that aapki jo understanding banegi, you will have enough time after discussing the main theory part, and then after solving certain numericals, certain problems, we'll have enough time to discuss the strain transformation as well within these 6 classes. Anyhow, if we could not finish that in time, then because the YouTube platform is open to us, we can upload lectures on any time and you can learn from the YouTube anytime. So that's not as far as the course is concerned, to hum iske bare mein bahut zyada concern nahi hai. We can do it anytime later on as well. So let's try to understand what exactly the stress transformation is and why do we need to transform stresses.
Okay, so normal and shearing stresses in beam, shaft, bars can be calculated from the basic formula discussed in the previous chapters. And we have discussed all these things so far, that the normal stresses in beam, the shearing stresses in beam, then the normal type of stresses in shaft that we usually call the torsional stresses. And then we have also studied the uniaxial stresses in bar, and we said that there might be compressive stresses, there might be tensile stresses as well. And that's what we have discussed so far in our discussion of this Mechanics of Solid 1 course. So for instance, the stresses in beam are given by the flexure and shear formula. That's what you have already developed. And my colleague Engineer Nisar Ahmed, I think he really has delivered lecture on this as well. So we can find out the flexural stress with the help of this flexure formula, that stress is equal to my upon I. So this is the distribution of these flexural stresses within a beam cross section. You have already gone through that. On the top fiber of the beam there would be compressive stresses, and on the bottom fiber there would be tensile stresses, and the distribution of the stresses would be like this. This is more or less the triangular distribution. That's what we have studied, but when you go into the detail of these, there is slight deviation from this exact triangular distribution is. So, and as far as this 0 point is concerned, we call it in neutral axis. Okay, so that's what you have already studied. And as far as the shearing stresses is concerned, that's the shearing stress from distribution. We already know that the shearing stress or minimum at the top and bottom fiber and the maximum at the centroidal axis when the beam is a homogeneous beam. There is not reinforced concrete beam. So that's the distribution of the shearing stresses. That's what we have already studied. And this is the distribution of the flexural stresses. That's what you have already studied. And then these are the distribution of the shearing stresses. That's what I have taught you in the discussion of the torsion, and when we were discussing the angle of twist and torsional stresses, we have learned that the distribution of the shearing stresses that would be minimum at the center of the solid shaft, and it would gradually increase, and it would be maximum at the outer fiber of that shaft. So these three things we have already studied. And the stress in the shaft are given by this torsion formula, TR upon J. That's what we have already studied. Okay? So the stress calculated from these formulas act on cross sections of the member. The important thing is that whenever we were discussing all these three types of stresses, the flexural stresses, the shearing stresses, and then the torsional stresses on the shaft, they were acting on a certain cross section of the member. As far as the beam is concerned, we knew that when we move along the beam, length of the beam, whether towards the right support or towards the left support, we knew that on different cross-sectional axes there would be different bending moment, and because of the different bending moment, there would be different bending stresses. There would be different flexural stresses at each and every cross-section. On that particular cross-section, the distribution of the flexural stresses would be different. So if, let's suppose, this is the length of the beam and you are considering the centroidal axis of that beam. So within that centroid of that beam, we knew that the distribution of the flexural stress would not be uniform, and it would be maximum at the top and it would be minimum at the bottom. And then if you move along the right or towards the left, on each and every cross section there would be different bending moment. On each cross section there would be different flexural stress, and within that cross section there would be a different distribution of the flexural stress across that cross section. So this particular formula, this stress is equal to my upon I, is the distribution of the flexural stress at a particular cross section. Right from the, if you are considering the left support to be 0 and right support to be the L, the length of the beam is 0 to L. So right from 0 till L on each and every cross section under consideration, the distribution of the flexural stress would be different on each and every cross section. That's what we know. And same is the case with the shearing stresses as well. On each and every cross section, the distribution of the shearing stress would be different. Okay, so the point that I want to highlight here is that the distribution of the flexural stresses vary along the length of the beam, and then it varies along the depth of the cross section as well. Okay, not just length but it varies along the depth. On each and every cross section, there would be a certain flexural stress, there would be maximum flexural stress on the top, and there would be minimum flexural stress on the bottom. And when you move along the length of the beam, on each and every cross section, the flexural stress would be different, and the distribution of the flexural stress across the depth of the cross section would be different. And same is the case with the shearing stresses as well. As you can see that on each and every cross section, the flexural stress would be minimum on top and bottom, and it would be maximum at the central axis of the beam.
And same is the case with the torsional stresses as well. On each and every cross section that we consider, because this is the topic that we have discussed right in the last lecture, so this is not very जो आपकी memory से अब तक निकला हुआ नहीं है, still in your memory and should be still in your memory, because that along the अगर ये if you have a shaft like this and I'm trying to twist, so on each and every cross section the distribution of the torsional stress would be different, and then within these cross section at every cross section the distribution of the shearing stress would be different across the cross section. Across the length it would be different, and within that cross section it would be different. So that's what we have studied so far in our discussion of flagellal stresses and shearing stresses and then the torsional stresses. So that's what I have highlighted here as well, that the stresses calculated from these formulas act on cross sections of the member, but larger stresses may occur on inclined section. But within that, if you are considering the section to be inclined, the larger stresses may act. Because right within all these three, the flagellal, shear and torsion, we were considering the section to be plane, right? We were not considering the inclined section. So if you are considering the section to be inclined, the larger stresses may occur on those inclined planes. So that's why we are interested in finding the distribution of the stresses across any distribution, not necessarily the cross section at the 90 degree. So maximum stresses can occur at any inclined plane, as you have seen that the shearing stresses normally occur at the 45 degree plane. The shearing stress would be maximum at the 45 degree. Because why they are so there might be certain planes on which these stresses can be greater than the stresses that we are considering on the cross sections. So if you are considering the cross section to be plane, there are chances. It's not necessarily that there would always be maximum, these stresses would always be maximum on the inclined plane. But in certain circumstances, these stresses can be maximum if you are considering the plane to be inclined. Anyhow, so that's what we are trying to understand. So when we will move along, you will see that whatever I am saying is true to some extent. So therefore, we will begin our analysis of stresses and strain by discussing methods for finding the normal and shearing stresses acting on inclined section cut through a member. जैसे last slide में हमने discuss किया कि there might be the intensity of the stresses can be maximum on plane other than the normal plane, on normal cross section. So then we would be interested, हमारी ये interest होगी कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि we should be in a position to find out those plane on which these stresses would be maximum. And what are those stresses? Those stresses normally we are considered to be normal and the shearing stresses. And then we may also see the torsion stresses as well. So there would be certain planes on which, and those planes would be inclined. And on those inclined plane, your stresses, the normal stresses and the shearing stresses can be maximum. And we are interested in finding out the orientation of those inclined planes, कि भाई किस डिग्री के ऊपर वो प्लेन इंक्लाइन है. If you are considering this to be a normal, वो है तो ये किस डिग्री के ऊपर वो इंक्लाइन प्लेन बन रहे हैं. So we are interested in finding out those things. ठीक है. तो यहाँ जो बात समझनी की है कि it's very important कि we should investigate, because question may arise in your mind कि भाई हम क्यों इंक्लाइन को पढ़ रहे हैं, हमने इतनी मेहनत करके वो जो है वो पढ़ लिया. So those were the basics कि भाई स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं क्रॉस सेक्शन के ऊपर. द कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन द क्रॉस सेक्शन आर क्वाइट सिंपलर, बट नॉट नेसेसरली दो स्ट्रेसेस आर द मैक्सिमम, बिकॉज द मैक्सिमम स्ट्रेसेस होती हैं जिस तरह आपने देखा है कि परमिसिबल स्ट्रेसेस हम फाइंड आउट करते हैं. तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो है दे आर ऑफ मेन इंटरेस्ट टू अस ना, कि वो अगर वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं वो आपके जो अलाउबल स्ट्रेसेस उस मटेरियल के उसको एक्सीड ना कर रहे हो. तो दैट्स व्हाई वी वुड बी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इंक्लिनेशन ऑफ दोज प्लेन ऑन विच दो स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम. ओके, सो दैट्स व्हाई ये जो सेंटेंस भी है आई हैव रिटन हियर कि we will begin our analysis of stress and strain by discussing methods for finding the normal and shearing stresses acting on inclined section cut through a member. Okay. So we have already derived expression for the normal and shearing stresses acting on inclined section in both uniaxial and pure shear. In the case of normal uniaxial stresses and the pure shear, we have studied the stresses of the inclined surface. If you have seen my lecture as well on the shearing stresses there, I have also discussed this there as well. But those are the case of the uniaxial stresses. Whether that stresses is the uniaxial है या फिर pure shear है, pure shear है, उन केसेस के अंदर हमने फिर ये स्टडी किया कि भाई इंक्लाइंड सर्फेसिस के ऊपर भी हमने देखा. लेकिन यहाँ जब ये चीज़ आ रही है तो बाई एक्सियल स्ट्रेसेस का यहाँ इन्वॉल्वमेंट आ रही है.
So in the case of the uniaxial stress, we found out that the maximum shear stress occurs on the plane inclined at the 45 degree to the axis. If you have seen my lecture on the shearing stresses, I have also discussed that in this particular phenomenon there as well, the maximum shearing stress normally occur at the 45 degrees inclination to the axis, whereas the maximum normal stresses occur on the cross section. ठीक है, ये जब हमने वो लास्ट लेक्चर आप मेरा देखें जाके शेयरिंग स्ट्रेस के ऊपर है तो यू विल सी, मैंने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है. तो वो यूनिएक्सियल का केस है. इन द केस ऑफ यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस द नॉर्मल स्ट्रेसेस वुड ऑलवेज अकर ऑन दिस नॉर्मल प्लेन and the maximum shearing stresses would occur on the plane of the 45 degrees in the case of the uniaxial. In the case of pure shear, we found out that the maximum tensile and compressive stresses occur on the 45 degrees plane. So in the case of pure shear का था तो pure shear के केस में 45 डिग्री के प्लेन के ऊपर दोनों जो स्ट्रेसेस है नॉर्मल भी हो चाहे वो शेयरिंग भी हो तो 45 डिग्री के प्लेन के ऊपर मैक्सिमम हो जाते हैं. In the case of uniaxial के ऊपर the normal stresses would be maximum on the normal cross section and the shearing stresses would be maximum on the 45 degree plane. But in the case of the pure shear, both the normal and the tensile stresses would be maximum on the 45 degree. This would be the normal stress and there would be maximum on the plane of the 45 degrees and the shearing stress would be maximum on this plane of 45 degrees in the case of pure shear. So that's what you have to differentiate here. What would be the case in the case if you are considering the stresses to be uniaxial stresses? Where would the normal stress would be maximum? Where would the shearing stresses would be maximum? And in the case of pure shear, at which plane the normal and shearing stresses would be maximum? That's what I have explained here, and that's what I have explained in my lecture on the shearing stresses as well. तो अगर वो जाके आप देखेंगे तो that's what I have discussed there as well. ठीक है, तो दैट वाज द फिगर, वो फिगर दिस इज द सेम फिगर दैट आई हैव पिक्ड फ्रॉम दैट माय लेक्चर. सो इफ़ यू हैव सीन दैट लेक्चर यू माइट रिमेंबर कि भाई ये जो फिगर है दैट इज द सेम फिगर जो कि मैंने, दिस इज द यूनिएक्सियल, दिस इज नॉट द प्योर केस ऑफ द प्योर शेयर. इन द केस ऑफ द यूनिएक्सियल द नॉर्मल स्ट्रेसेस वुड अकर when it's of 90 degree on this particular plane, and when you are considering a plane which is inclined at 45 degrees to this particular axis, the shearing stress would be maximum on this particular plane. ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले भी बयान कर चुकी हैं. So in an analogous manner, the stresses on inclined section cut through a beam may be larger than the stresses acting on a cross section. ये मैंने फिर वहाँ भी आपको समझाया था कि जो analogous manner पे जो कोई बीम है, बीम के अंदर यूनिएक्सियल केस नहीं है ना, तो बीम इज डिफरेंट देन दी बार. बार के अंदर तो आपके पास यूनिएक्सियल आ रहा है या प्योर शेयर आ रहा है. जब बीम का कहानी हो रही है तो बीम के अंदर देयर आर डिफरेंट स्ट्रेसेस एक्टिंग एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेन. Whether we are acting to be plane to be normal cross section, on this normal cross section there would be flagellal stresses, or on this normal cross section there would be shearing stresses as well. So there is no uniaxial case, right? ये होपफुली आपको बात समझ आ रही है. और ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम जो केस है वो ये है कि हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर देयर वुड बी different stresses, there are different normal stresses, different shearing stresses, but those normal and those shearing stresses cannot always be maximum. So there would be certain plane, there would be certain inclined plane on which these stresses would be maximum. To calculate such stresses, we need to determine the stress acting on an inclined plane. We need to determine the stresses acting on inclined plane under a more general stress rate known as plane stress. So that's what I've written this plane stress in red. That's what inshallah I will explain now. कि ये plane stress क्या होता है. स्ट्रेस तो अभी तक आप सुनते में आई है कि भाई प्लेन स्ट्रेस क्या है, तो इसलिए मैंने इसको रेड में लिख दिया कि ये जो टर्मिनोलॉजी है दिस इज़ न्यू टू यू एंड आई वुड बी एक्सप्लेनिंग दैट वेरी सून टू यू इंशाल्लाह कि प्लेन स्ट्रेस क्या है. टू कैलकुलेट सच स्ट्रेसेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं जो हम कह रहे हैं कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हैं, वी नीड टू डिटरमिन द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन अंडर मोर जनरल स्ट्रेस स्टेट नॉन एज द प्लेन स्ट्रेस. ठीक है, तो वो उसके ऊपर स्टेट ऑफ द स्ट्रेस आएगी और एक प्लेन स्ट्रेस आएगा, वो हम देखते हैं कि क्या होता है, वो आगे चल के हम आपको समझाएंगे. तो यहाँ इस चीज़ रेड में इसलिए लिख दिया कि ये अब आपको पता चल रहा है कि दिस इज न्यू टर्मिनोलॉजी एंड दैट वुड बी एक्सप्लेन वेरी सून. सो वी विल बिगिन आवर एनालिसिस बाय कंसीडरिंग एन एलिमेंट ऑन विच द स्ट्रेसेस आर नॉन. तो विल सी हम एनालिसिस कैसे करेंगे कि हम विद इन दैट बी में एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके ऊपर स्ट्रेसेस हमें पता है, नॉन है हमें वो स्ट्रेसेस, उस नॉन स्ट्रेसेस की मदद से एंड देन वी विल डिराइव द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. हम फिर कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बना सकें जो नॉन हमारे पास स्टेट ऑफ द स्ट्रेस है उसकी मदद से हम कोई ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस नॉन स्टेट ऑफ स्ट्रेस को किसी अननॉन की फॉर्म में. बिकॉज इफ़ यू नो अ स्टेट ऑफ द स्ट्रेस ऑन दिस नॉर्मल प्लेन, ठीक है, तो दिस लेट्स सपोज कि ये इस प्लेन के ऊपर जो बीम के ऊपर किसी भी आपने प्लेन कट किया और वो नॉर्मल प्लेन है और उसके ऊपर आपको स्टेट ऑफ द स्ट्रेस नॉन है, यू नो कि भाई कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द टॉप, यू नो कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द बॉटम.
ठीक है, लेट्स सपोज दिस। और उसके साथ साथ आपको पता है कि इस प्लेन के ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज दैट यू हैव स्टडीड सो फार। So that is a non-state of stress. So from this knowledge of the state of the stress, we should be able to transform this non-state of stress into in any inclined states. उस प्लेन को फिर हम किसी भी उस पर इंक्लाइन कर दें राइट फ्रॉम 0 to 360 डिग्री पर, तो हम एक ऐसी इक्वेशन में इंटरेस्टेड हैं कि उस नॉन स्टेट ऑफ स्ट्रेस से फिर हम ये अननॉन किसी भी प्लेन के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर सकें अपनी उस नॉन स्टेट ऑफ स्ट्रेस को। दैट्स वाई दीज इक्वेशंस आर नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करती हैं दूसरी स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, ठीक है। तो ये बड़ी यूज़फुल टूल साबित होता है, क्योंकि अगर आपके पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस ना होना तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट द स्टेट ऑफ द स्ट्रेस ऑन एनी इंक्लाइन प्लेन। किसी भी इंक्लिनेशन के ऊपर चले जाए, राइट फ्रॉम 0 to 360 डिग्री की इंक्लिनेशन के ऊपर आप जाएँ तो आप किसी भी प्लेन के ऊपर वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट्स द मेन टॉपिक जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दैट वो मालूम करना हमारा आज का मेन हमारी क्यूरोसिटी है, हमारा मेन थर्स्ट है कि हम किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को नॉन कर सकें। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ समझने की वो ये हो रही है कि आप इसको समझ सकें कि हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हमें क्यों ज़रूरत पेश आ रही है। होपफुली ये आपकी बात समझ में आ चुकी है कि क्यों समझ में आ रही है। सो किसी भी स्टेज के ऊपर, क्योंकि मैंने आई टोल्ड यू कि दिस टॉपिक इज कंपैरेटिवली न्यू एंड कंपैरेटिवली जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज अ बिट हाई। सो इफ यू फील डिफिकल्टी एट एनी लेवल, सो डू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक मैकेनिकल सॉलिड 2 के अंदर फिर आपकी बहुत सारी फर्दर डिस्कशन हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ इन चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आपको कहीं भी कोई मुश्किल फील होती है तो डू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। यकीनन इसके अंदर मुश्किलात होंगी आपको समझने के लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ लेके चल सकूँ। तो जहाँ जहाँ आपको मुश्किल पेश आती जा रही है, डू नोट डाउन योर क्वेश्चन एंड आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। तो आगे चलते। सो देन वी विल डिराइव द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दैट गिव द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ एन एलिमेंट ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने बताया कि इन एनी डायरेक्शन राइट फ्रॉम 0 डिग्री to 360 डिग्री किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दैट नॉन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस वुड बी एबल टू फाइंड द स्ट्रेसेस। So the stress conditions that we encountered in earlier chapter, जो कि हमने पहले चैप्टरों में देखा है, पहले लेक्चर में देखा है, when analyzing bar in tension and compression, then when we discussing this shafts in torsion के में हम देख रहे थे, and beams in bending are example of state of stress called plane stress। वहाँ आप देख रहे थे कोई एक प्लेन था, उस प्लेन के ऊपर हम स्ट्रेस को देख रहे थे। तो प्लेन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अगर आप एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस को देख रहे हैं तो then that would be known as the plane stress। तो प्लेन स्ट्रेस की जो टर्मिनोलॉजी थी वो यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि जो भी हमने केसेस किए हैं जो आप देख रहे हैं कि हमने बार्स को किया है टेंशन कंप्रेशन में, शाफ्ट्स को किया है टॉर्जन में, और बीम को किया है बेंडिंग में, तो जब भी हम उसमें एनालिसिस कर रहे थे वी वर एनालाइजिंग एट अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एंड दैट क्रॉस सेक्शन वाज वी वर कंसिडरिंग। हम कह रहे थे कि जो प्लेन सेक्शन है दैट वुड रिमेन प्लेन, उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। इवन टॉर्जन के अंदर भी याद होगा आपको कि हम कह रहे थे भी उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, प्लेन सेक्शन वुड रिमेन प्लेन। सो एनी प्लेन जो सेक्शन अगर प्लेन है तो वो ऑन एंड यू नो द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेन, देन दैट वुड बी नॉन एज द प्लेन स्ट्रेस, ठीक है। तो अब ये प्लेन स्ट्रेस का समझ में आया कि क्या चीज़ है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि एक उस प्लेन के अंदर एक पॉइंट अगर है तो उस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेसेस क्या होंगे। सो वी नो द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ प्लेन and then within that plane we are converging ourselves to a particular point and we are saying that this is the stress at a point. So basic concept of stress analysis is the state of the stress at a point. तो stress analysis जो हम आज कर रहे हैं उसका जो basic concept है वो that is a state of stress at a point. तो at a point, एक point के ऊपर, अब हम इसको explain करते हैं कि क्या चीज़ है। तो the state of a stress at a point is defined by the stress component, इसको डिफाइन किया जाता है by the stress component acting on the sides of a differential volume element that encloses the point। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपने ये बॉडी कंसीडर कर रहे हैं उसके ऊपर आप स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट लेने चाह रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द आप एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं और उस डिफरेंशियल एलिमेंट के ऊपर आप देखते हैं कि क्या स्ट्रेसेस है, और वो जो स्ट्रेसेस होंगे दैट वुड बी नॉन एज द स्ट्रेस एट अ पॉइंट। वो अभी आपको यहाँ के इस फिगर में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये लेट सपोज ये आपके पास एक शाफ्ट थी, ठीक है, जिसके ऊपर ये एक बेंडिंग भी मोमेंट भी लगी हुई है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये दिस एम इज क्रिएटिंग द फ्लैक्चर बेंडिंग इन दिस एंड दिस torque is creating the torsional stresses. So there would be different sort of stresses in this, because of the bending and because of the torque, because of the applied bending moment and because of the applied torque, there would be different sort of stresses. And within that shaft, we are considering a very differential element.
We are not considering a cross section, we are considering a differential element of a very small size, of a very small differential area. एंड दिस जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये इसको इनलार्ज करके हम इस फॉर्म में दिखा रहे हैं, और इसकी जो फेसेस के ऊपर जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, जो फ्लैगरल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ये दो देख रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस टार्क हम इसके अंदर ये शेयरिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं ऑन द फेसेस, तो ये दिस विल गिव अस अ स्टेट ऑफ द स्ट्रेस, and that state of stress is a stress at a point, because we are considering a point, a very small differential area, and that point is enclosed within that differential area. समझ में आ रही बात की? एक छोटा सा पॉइंट है, विद इन दैट पॉइंट, उसके पॉइंट इर्द गिर्द वी आर कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल डिफरेंशियल एरिया, दैट डिफरेंशियल एरिया इज इंक्लोजिंग दैट पॉइंट, और ऑन दैट पॉइंट हम देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ द स्ट्रेसेस क्या है, दो स्टेट ऑफ द स्ट्रेस इज नॉन टू अस, और इस नॉन स्टेट ऑफ स्ट्रेस से फिर हम किसी भी इंक्लाइन एंगल प्लेन के ऊपर हम जाके, लेकिन वो प्लेन जो होगा, वो जो इंक्लाइन प्लेन होगा उसके अंदर वो पॉइंट कंटेन कर रहा होगा, उसके अंदर वो पॉइंट कंटेन कर रहा होगा। ये अगर मैं आपको यहाँ पॉइंट समझा सकूँ, तो लेट सपोज अगर आप वो कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट था वो इस शाफ्ट के अंदर, ये मैंने एक शाफ्ट बनाई, लेट सपोज ये एक शाफ्ट थी, इस शाफ्ट के अंदर वो पॉइंट यहाँ था, जिस पॉइंट को आपने यहाँ कंसिडर किया है, और ये पॉइंट इस डिफरेंशियल एरिया के अंदर इनक्लोज था। अब ये जो स्टेट ऑफ द स्ट्रेस है वो हमें ऐसे मिल गई। अब अगर आप इस डब्बे को मैं इनलार्ज करके यहाँ ले जाऊँ और इसको एक क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में दिखा दूँ, और वो दैट पॉइंट इज़ बीइंग इनक्लोज लाइक दिस। अब ये पॉइंट, ये पॉइंट, अब तमाम ये जितने भी मैंने प्लेन बनाए हैं, ये तमाम के तमाम प्लेन में ये पॉइंट जो है वो कंटेन कर रहा। तो विद द हेल्प, इनिशियली हमें नॉन था ये वाला, दिस स्टेट ऑफ द स्ट्रेस वाज नॉन टू अस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड बिकॉज सिंस वी न्यू कि भाई ये दिस इज द स्टेट ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है। इस नॉन स्टेट ऑफ स्ट्रेस से हम फिर किसी भी ये एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन, किसी भी प्लेन के ऊपर हम फिर ये जो स्ट्रेस है उसकी कंडीशन है, स्टेट है, वो हम नॉन कर सकते हैं। किससे नॉन कर सकते हैं? फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दैट विल बी डिराइव्ड। तो स्ट्रेस एट अ पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट है जो कि एक डिफरेंशियल एरिया में इनक्लोज है, और उस डिफरेंशियल एरिया को अगर आप ओरिएंटेशन देना शुरू कर दें किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेट सपोज ये रिमोट है मेरे एयर कंडीशनर का, ये एक वो डिफरेंशियल एरिया था कि बहुत स्मॉल है, ठीक है। इनिशियली जो हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस नॉन थी वो इस डिफरेंशियल एरिया के ऊपर नॉन थी। अब इस ओरिएंटेशन पे इस पर्टिकुलर ये जो पॉइंट था इस डिफरेंशियल एरिया के अंदर कंटेंट था, ठीक है, और इस ओरिएंटेशन के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है इसके ऊपर हम स्टेट ऑफ द स्ट्रेस नॉन थी। अब इस नॉन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस में फिर मैं अगर इसकी ओरिएंटेशन यूं किसी भी पॉइंट के ऊपर चेंज करता रहूं, लेकिन अगर आप देख लें कि जो इसकी मोमेंट है वो मेरे ये इस उंगलियों के इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना, इसके इर्द गिर्द, तो ये किसी भी 360 ओरिएंटेशन के ऊपर हम अपने इस नॉन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस से अपना इस प्लेन के ऊपर भी मालूम कर सकते हैं, इस प्लेन के ऊपर भी मालूम कर सकते हैं, इस प्लेन के ऊपर भी मालूम कर सकते हैं, किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर हम मालूम कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। और ये जो फिर अब आपके ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर आप 3 डायमेंशन के अंदर देखते हैं और उसके जो फेसेज हैं उसके ऊपर फिर स्ट्रेसेस जो होंगे वो इस तरीके से होंगे। ये स्ट्रेसेस क्या है, इसकी नोटेशन क्या होगी, ये हम यकीनन अब इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसको फिर क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेंगे ताकि आप आस्ता आस्ता इसको डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।